ओके हेलो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इनसाइड टू आउटसाइड ब्लॉक और टू ब्लॉक विथ फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। आई शो यू टुडे हाउ टू ब्लॉक फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ओके, एंड देन आई शो यू सम स्टेप्स हाउ टू मूव योर लेग, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इनसाइड टू आउटसाइड ब्लॉक करते वक्त कौन सा पैर बाहर जाएगा और आउटसाइड टू इनसाइड करते वक्त कौन सा पैर आउट जाएगा, ओके। हाँ, तो आज मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ टू ब्लॉक आउटसाइड टू इनसाइड। एज कम फ्रॉम आउट, लेफ्ट लेग इज राइट साइड एंड बॉडी 45 डिग्री क्रॉस करें। बॉडी शुड बी क्रॉस 45 डिग्री, then back again, okay, at each पैर की बॉडी नीचे का तरफ करो। when you block with your hand outside, then leg will be this way and right leg will turn 45 degree, okay, then back again. now पूरा देखो, at each back, go from the side. लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था ब्लॉक इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। टुडे रिवर्स, आज जो मैं दिखाऊंगा वो रिवर्स, उसको उल्टा है। ब्लॉक इज द सेम हैंड बट पंच इज कमिंग विद अनदर हैंड, so you have to go outside. Just the block, left leg will go out and turn this way, then move back and each chop hand, then you move. Okay, now punch is coming, show you this side. So don't turn too much like this, only 45 degrees from here just this way. Then you can do the another like this, okay. This ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका थोड़ा इसमें फास्ट रहना पड़ेगा, ये टेक्निक्स है, ओके। ये बेसिक्स नहीं, ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है। द पंच इज कमिंग टू द फेस, ओके। यू हैव टू गो लिटिल डाउन, गो एंड डाउन जाकर कर पैर हमेशा don't bend up, just when you going down, just down like this, down, down. So the punch is coming to your face. The punch is coming to your face, go down. At the same time, your punch will go inside, Shoman Mamashi Suzuki. At the same time, you go Mamashi to the face. Okay. So you have to be very fast in this technique. Alright. At each quick. Now I'll show you that from another side. ध्यान से देखो। You have to be very quick. Keep your fist firm, tight. Okay? So that's it for today. Hope you all guys enjoying. आप लोग सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। तो वार्म अप एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह 15 to 20 मिनट्स करना है। मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारा स्ट्रेचिंग वार्म अप एक्सरसाइज है, आपको दिख जाएगा। सो यू जस्ट फॉलो द वीडियो एंड डू ऑल द स्ट्रेचिंग, और जो आपको भी मालूम है वो भी करो। तो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स स्ट्रेचिंग वार्म अप एक्सरसाइज
करने के बाद जो है कोई सा भी टेक्निक किक पंच कुछ भी करो। ओके, सो कोई जो भी मैंने टेक्निक दिखा रहा हूँ वो टेक्निक फर्स्ट स्टार्ट स्लोली, उसके बाद इंक्रीज योर स्पीड। ओके, तो मैं सो दैट्स फॉर इट टुडे।